हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीको। तो आज हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑन चाइल्ड मैरिज। सो रिसेंटली सुप्रीम court have given a ruling regarding child marriage and with the arrangement of child marriage. So we are going to discuss about this. In second issue, we are going to deal about the citizenship, especially which is regarding Assam. And in third issue, we are going to discuss about the new lady justice. So in first issue, as we said, in the case of Society for Enlightenment and Voluntary Action, okay, so this is the NGO which was the petitioner in this particular case, and they filed this particular petition. So the Society for Enlightenment and Voluntary Action versus Union of India. In this case, Supreme Court ruled and stressed that child marriage, it violates a child's free choice and childhood. And they also urged Parliament to ban the child betrothals. And now, what is child betrothals? Child betrothals is actually a arrangement or promise of a marriage. For example, दो अंडर एज बच्चे हैं या दो अंडर एज चाइल्ड है, उनके पेरेंट्स अगर उनका कुछ छोटा सा सेरेमनी करके या मैरिज ऑफ प्रॉमिस या कुछ कस्टम करके पहले ही उनकी जो मैरिज है वो फिक्स करते हो, दैट इज कॉल्ड betrothals. अब ये betrothals आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्ट्रेस करा है. सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है पार्लियामेंट को टू इंटरवीन इन चाइल्ड मैरिज एंड ऑल्सो इन चाइल्ड betrothals. बिकॉज होता ये है कि बहुत सारी इंडिया में प्लेसेस ऐसी है जहाँ पर चाइल्ड मैरिज तो वो सोलमनाइज नहीं करते हैं. वो फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 11-12 उन बच्चों की वो शादी फिक्स करते थे और दे डू सर्टेन सेरेमनीज, ठीक है, और उस सेरेमनी से उनकी शादी फिक्स हो जाती है. एंड व्हेन दे अटेंड द मेजोरिटी या ऑन द वर्ज ऑफ मेजोरिटी उनकी शादी मैरिज हो जाती है. सो द कोर्ट डायरेक्टेड अथॉरिटी टू इन्फोर्स लीगल, judicial and technology driven measures to eliminate child marriage as well as the child betrothals. ठीक है, and they also assert that कि PCMA, what is PCMA? It is Prohibition of Child Marriage Act. ठीक है, this will override the personal laws. Because if we see, there are certain personal laws in certain religions where we can see that कि अभी भी जो एज ऑफ मैरिज है दैट इज लेस देन 18 ईयर्स. ठीक है, सो इसलिए इफ वी सी पर्सनल लॉज में कुछ भी लिखा हुआ हो, पर्सनल लॉ को ओवरराइड करेगा पीसीएमए. Now, what is court's ruling? So, court said they observed that we signed CEDAW. What is CEDAW? That is Convention on Elimination of Discrimination Against Women. So, under this, it is specifically mentioned that कि सिर्फ child marriage ही नहीं, जो माइनर betrothals है दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड. तो सीडो में हमारा ये कमिटमेंट है कि हम चाइल्ड मैरिज तो एलिमिनेट करेंगे, साथ ही साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू एलिमिनेट विद betrothals. अब ये betrothals को रिगार्ड given under our Prohibition of Child Marriage Act. So Prohibition of Child Marriage Act जो 2006 का है, इसमें there is no any explicit provision which deals with the ban of betrothals. Betrothal, arrangement of marriage, promise of marriage, any custom that promises a marriage. Okay, just a second. Okay, I think someone messaged me the screen is not visible. Just give me a second, guys. Okay, thank you. Okay, I'll just quickly recap. ठीक है, so here we are going to discuss about Supreme Court's recent ruling on child marriage. ठीक है, so the name of the case in which this ruling is given, that is Society for Enlightenment and Voluntary Action versus Union of India. So what they have said, कि they stress that child marriage violates child's free choice and also their childhood. ठीक है, so here they said कि Parliament to ban child betrothals. Why they said कि it should be banned because in CEDAW we have committed that कि with child marriage we'll also going to ban the child's betrothals, and child betrothals के banning के से regarding we don't have any law in our Prohibition of Child Marriage Act 2006.
ठीक है, so far we have discussed this. Let's see a background of this particular thing. So if we see in India, in Indian society or Indian culture, we can see that there are so many things. Because of that we have child marriage. So child marriage, if we see historical prevalence of early child marriage, so it was very common earlier. The child marriage was very common, especially for girls, to to secure certain socio-economic benefit or family alliances. So we can see कि family alliances करना है तो उसके लिए they use child marriage as one of the means. ठीक है, so this is the first thing. Other than that, कि if we see in India, India have very, in early age we can see we had very large chunk of population who are economically very deprived, or who are in the lower strata of the in the lower strata of economic in their economic situations. सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर पेरेंट्स एक चाइल्ड का या एक पर्सन का एडिशनल एक पर्सन का बर्डन रखने से बेटर वो ये चूज करते थे कि वो उनके बच्चों की जल्दी शादी करते, स्पेशली फॉर गर्ल्स. वन मोर थिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो, there are viewpoint regarding this particular judgment. They say कि Supreme Court have ruled very good thing, but they should also consider कि आज भी बहुत सारे रूरल प्लेसेस है वहाँ पे अर्ली मैरिज इसलिए होती है to avoid any sexual exploitation of their minor girls. बिकॉज बहुत सारे रूरल एरियाज में हमको ये चीज भी देखने को मिलती है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि देयर फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट वेल, और उसको लेकर भी उनकी अर्ली मैरिज हो जाती है. बहुत सारी प्लेसेस पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि एजुकेशन से रिलेटेड इतना अवेयरनेस नहीं है, या साथ ही साथ एजुकेशन की आप जो कॉलेजेस है दैट इज ऑल्सो फार फ्रॉम देयर विलेजेस और फ्रॉम देयर होम्स. इसीलिए भी अभी किसी वुमेन, किसी माइनर गर्ल को घर पे बिठा के रखना पेरेंट्स इज एट एज अ रिस्क. ठीक है, सो दिस इज द थिंकिंग, और दिस इज द रीजन in the rural areas especially we can see. If we move toward the medieval period, so medieval period में we can see कि reinforcement by religious. So we can see कि medieval period में when we see Delhi Sultanate or we see the Mughal era, so वहाँ पे we can see कि religious identity जो थी या religious mindset जो था that was pushed. ठीक है, so under that religious reinforcement we can see कि वहाँ पे age of marriage वो जो था that is at the time of puberty. So the moment you attain the puberty, that will be your age of marriage. So therefore the age of marriage at that particular time was very less, or it was decreased. So now when we move toward the British colonial intervention, so when we see British colonial intervention, especially at that time, two social reformers, first Raja Ram Mohan Rao and second is Ishwar Chandra Vidyasagar. These were two social reformers who exposed the harms of child marriage, and they also promoted British government to address such issue. So if we see key legislative or judicial measure that was taken at that particular time, so the very famous and the very first case or the legal intervention we can see, that was by Dadaji Bhikaji Rukmabai case. Now, if you know Rukmabai is the first practicing woman doctor in India. So she was if we see her life, she was married at very young age. ठीक है, उनका भी चाइल्ड betrothal हुआ था. देयर वाज अ कस्टम जिसमें उनकी मैरिज फिक्स हो गई थी, एंड शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड इंटरेस्टिंगली बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके फेवर में रूल करा था, और उसके बाद में इट वाज पॉसिबल टू परस्यू हर एजुकेशन, और उनके उसके बाद में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन इंडिया. उसके बाद में वी कैन सी, सो दिस केस वाज ऑफ 1885. आफ्टर 6 years गवर्नमेंट केम अप विद एक्ट दैट इज एज ऑफ कंसेंट एक्ट. ठीक है, बाय विच जो मैरिजेबल एज है दैट वाज रेज टू 12 years. And after that, in 1929, famously known as a Sarda Act, also called Child Marriage and Restraint Age, by which the marriageable age is increased for women to the 14 years and for boys it is 18 years. Okay, and after that, if we see the present legal framework, we have Prohibition of Child Marriage Act of 2006, by which now marriageable age is 18 for women and 21 for the boys. Okay, so what is main purpose of this particular act? Prohibition of Child Marriage Act, that is PCMA 2006. First is to prevent child marriage. Second, deciding their minimum age. Third thing that also provide it is so it make the child marriage voidable. So after attaining the majority,
that child have 2 years to annul the मैरिज. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल कोई गर्ल है, उसकी शादी हो गई एट द एज ऑफ 16. ठीक है. व्हेन शी अटेन द 18 ईयर ऑफ एज, 18 से लेकर 20 ईयर ऑफ एज तक उस गर्ल के पास में ये चांस होता है टू अनल दिस मैरिज. ठीक है. सो टिल द 18 ईयर्स, या जब तक वो डिसाइड नहीं करती है कि उसको अनल करना है या कंटिन्यू करना है विद दैट मैरिज, तब तक हम इसको वी विल कॉल इट अ वॉइडेबल मैरिज. One more thing, under this particular act, penalties are given. Penalties against the parents, against the people who are going to these marriages, against the pandit who is solemnizing this particular marriage. Okay, so the penalties, very strict penalties in the form of fines and imprisonments were imposed on the person who conduct, who facilitate, or who support the child marriage, including the parents or the guardians. ठीक है. It also, this particular act also prescribe the child marriage prohibition officer. What is this child marriage prohibition officer? So this is the officer who authorize this is the officer who is authorized by the state or who is appointed by the state governments. ठीक है. Who is dedicated to prevent this child marriages, and he also ensure, he or she, this officer also ensure the compliance with the act, कि सारे के सारे जो provision of this particular act it is implemented or not. ठीक है. And they also take the measures. One more thing, under this particular act it is given that कि if any girl or any child bride, ठीक है, if उसका child marriage होता है, उसके बाद में for example she annulled, she came out from that particular marriage, तो till her remarriage, ठीक है, under this act it is the duty, it is the responsibility of the government to provide her maintenance. ठीक है. और मेंटेनेंस जो भी उसके पेरेंट्स होंगे या जो भी सोर्सेस होंगे वहां से भी मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने में हेल्प करे. एंड वन मोर थिंग, the scope of this particular act, it have a overriding effect over custom, laws and personal religious practices. One more case that we have, that we also discussed in our previous session जब हम मैरिटल रेप की बात कर रहे थे, that is the independent thought versus union of India. Under that, Supreme Court ruled that, so earlier we have section 375 of IPC, that is regarding the provision of the rape. ठीक है. So the provision of the rape में we can see कि exception 2 था, जिसमें it was given that कि अगर कोई वुमेन है, so earlier the main provision जो 1860 के हमारे आईपीसी में था, it was that कि अगर कोई वुमेन है in the institution of marriage और अगर वो 15 ईयर के अबव है, ठीक है, तो हम उसको, तो उसका हस्बैंड अगर उसके साथ में रेप भी करता है, so विल नॉट कंसिडर इट एज रेप. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने बाय इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या करा, जो 15 ईयर था उस 15 ईयर को दे इंक्रीज टू 18 ईयर्स, कि अब 18, अब अगर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में हो और अगर वुमेन की एज 18 ईयर्स से कम है, so in that scenario, अगर if sexual intercourse happened against her will, then it will be rape. ठीक है. And husband will be charged by the rape. So now we can see कि BNS में ये जो provision है, we have section 63 and 64. 63 में it is 63 में the definition of rape is given. ठीक है. तो अभी presently जो section 375 है, that is section 63 of BNS. ठीक है. So section 63 exception 2 में, और जो rape का punishment है, that is given under section 64 of BNS. Earlier it was section 376. Okay, now what are the guidelines that is given by the court? So first is, it is regarding the sexuality education, or we can say it's a sex education. So now it is the responsibility of state government and the central government to impart to implement the age appropriate culturally sensitive sexuality educations in schools. Second, child marriage free village initiatives. So for example, presently we can see कि वी हैव ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज इनिशिएटिव्स. ठीक है. जब हमने स्वच्छ भारत इंट्रोड्यूस करा था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, गवर्नमेंट आल्सो इंट्रोड्यूस दिस ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज इनिशिएटिव. सो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट करा है कि ऐसे ही हमें एक नए कैंपेन भी गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए, दैट इज चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस. ठीक है. और इसमें लोकल और कम्युनिटी लीडर्स को हमें इंगेज करना है, जस्ट लाइक ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस इनिशिएटिव वी हैव
Done. उसके साथ में दे सेट कि देयर शुड बी अ ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल। अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल होम मिनिस्ट्री के साथ में होना चाहिए, जहां पर हम किसी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकें, और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी नंबर्स है, वो भी इन पोर्टल्स पे रिफ्लेक्ट होगी। कितनी चाइल्ड मैरिजेस हुई, कितनी हमने रुकवाई, कहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है उसका इंटरवेंशन हुआ, एंड व्हाट थिंग हैव डन। उसके साथ में कॉम्पनसेशन स्कीम भी आनी चाहिए फॉर चाइल्ड मैरिजेस। जो गर्ल्स ऑप्ट करती है फ्रॉम द चाइल्ड मैरिजेस, तो उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उन्होंने स्कीम स्पेशली स्कीम लॉन्च करनी थी। और साथ ही साथ देयर शुड बी एनुअल बजट एलोकेशन, हमारे बजट में एक स्पेशल बजट एलोकेशन होना चाहिए फॉर प्रिवेंशन of child marriage and for support those who are affected from child marriages. So this was our first topic. Now second topic, that is regarding Supreme Court recently upholds the section 6A of Citizenship Act of 1955. Okay, so this judgment is given by 4:1 majority. In this case, Supreme Court held that section 6A of Citizenship Act of 1955, it is constitutionally valid. So the bench was composed of five judges: Justice D.Y. Chandrachud, along with Justice A.S. Bopanna, Justice M.M. Sundaresh, Justice J.B. Pardiwala, and Justice Manoj Mishra. So in this case, Justice Pardiwala, he is given a dissenting judgment, or बची हुई चार judges have supported this particular provision. So the name of the case is Re Section 6A Citizenship Act of 1955. नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, कि ये एक्ट जो पर्टिकुलर सेक्शन है, दिस सेक्शन इज रिगार्डिंग असम ओनली। सो असम के लिए स्पेशली ये सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द असम अकॉर्ड ऑफ 1985। विल कम टू दिस असम अकॉर्ड, ठीक है। तो असम अकॉर्ड एक ट्राइपार्टिक एग्रीमेंट था। इस ट्राइपार्टिक एग्रीमेंट 1985 में होता है, और उसके लिए असम के लिए स्पेशली वी इंट्रोड्यूस दिस सेक्शन 6A। अब इफ वी सी, अगर इंडिया की सिटीजनशिप आपको चाहिए, और इफ यू वांट टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट, वो हमारे आर्टिकल्स, वी कैन सी आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 इन आर्टिकल्स में दिए हुए हैं। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 भी है, ठीक है। सो आर्टिकल 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली हमें सिटीजनशिप के क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। अब वी नो कि हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन होने के बाद में वी हैड इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो भी पाकिस्तान था। तो वी हैव पुट अ कट ऑफ डेट ऑफ 19 जुलाई 1949। तो हमने बोला कि जो पाकिस्तान या आज का जो बांग्लादेश है, उस वक्त इट वाज ईस्ट पाकिस्तान, उससे जो इंडिया में आना चाहता है वो 19 जुलाई 1949 के पहले आ जाओ, तो यू विल गेट इंडियन सिटीजनशिप। उसके बाद में अगर कोई आता है तो दैट पर्सन विल नॉट गेट एनी सिटीजनशिप। बट टुडेज बांग्लादेश, दैट वाज अर्लियर ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान इस प्रोविंस में, पाकिस्तान की इस प्रोविंस में काफी ज्यादा एट्रोसिटीज होती है। व्हाई? बिकॉज दे आर कल्चरली एंड लैंग्विस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। सो ईस्ट पाकिस्तान बंगाली स्पीकिंग थे, तो इनके साथ में काफी एट्रोसिटीज होती है, ठीक है। इवन आर्मी की एट्रोसिटीज होती है, उसको लेकर ईस्ट पाकिस्तान की पीपल रिवॉल्टेड एंड 1979 में दे गॉट इंडिपेंडेंस एंड दे बिकेम बांग्लादेश, जिसमें इंडिया प्लेड अ वाइटल रोल। अब उस ईस्ट पाकिस्तान में इतनी सारी एट्रोसिटीज हो रही थी, उसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान के लोग माइग्रेटेड टू नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली इन असम, विच एक्चुअली चेंज्ड द डेमोग्राफी ऑफ असम, ठीक है। और वहां पे बहुत कल्चरल टेंशंस भी होते हैं। तो उसी को लेकर फाइनली एक असम अकॉर्ड होता है 1985 में, और उसमें दो कट ऑफ डेट्स डिसाइड होती है। अब दो कट ऑफ डेट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट कट ऑफ डेट डिसाइड होती है कि जनवरी 1 1966 के पहले, हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान में जो भी हो रहा था, उसको लेकर पीपल माइग्रेटेड इन असम, ठीक है। ये इलीगल इमिग्रेशन तो ऑब्वियसली। सो 1966, 1 जनवरी 1966 के पहले जो असम में आ गए, वी विल गिव देम सिटीजनशिप, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस कि आप 1966 के पहले आए हो, और आपके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वर द पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। उसके बाद में वी पुट वन मोर कट ऑफ डेट कि 1 जनवरी 1966 से लेकर मार्च 24 1971 के बीच में जो लोग आए हैं, ठीक है,
उन लोगों को सिटीजनशिप देंगे, बट राइट टू वोट नहीं मिलेगा टिल नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स तक उनको राइट टू वोट नहीं मिला। दैट वाज मार्च 24 1981 तक। तो हमने दो कैटेगरीज बनाई। 1966 के पहले जो आया, ठीक है, यू विल बी सिटीजन। और 1971 1966 से लेकर 1971 के बीच में जो आया, ठीक है, फॉर दोज पीपल व्हाट वी हैव डन, वी सेड कि वी विल गिव यू सिटीजनशिप, बट ये सिटीजनशिप आपको मिलेंगे, बट वहां पे राइट टू वोट आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या ऑब्जेक्टिव था फॉर दिस सेक्शन 6 से, तो ये सब सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, दैट इट एम टू रिड्यूस द सोशल पॉलिटिकल टेंशन अराइजिंग फ्रॉम इमिग्रेशन इशू इन द स्टेट। नाउ सिटीजनशिप के वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग कि प्री 96 इमिग्रेंट्स के लिए क्या होगा एंड पोस्ट 96 इमिग्रेंट्स, दैट इज टिल 1971। अब 1971 के बाद में, मार्च 1971 के बाद में जो भी आया है, दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, और दे विल नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। Now, interestingly, what were the contentions in this particular case? So, grounds. What were the grounds for challenge? First is the claim of discrimination. Okay, so the NGOs like Assam Public Works, Assam Sanmilita Mahasangh. Okay, so this were the NGOs who filed a petition regarding Section 6A of Citizenship Act. So, according to them, they said that this provision, Section 6A, that is only for Assam, it is a discriminatory. इट गोस अगेंस्ट आर्टिकल 14 की दूसरे स्टेट्स में तो ऐसा नहीं है, असम में ही ऐसा क्यों है? सो दे सेड फॉर दिस थिंग, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग वाज दैट कि इनकंसिस्टेंट सिटीजनशिप स्टैंडर्ड्स। दे सेड कि अदर पार्ट्स में आपने 19 जुलाई 1948 रखा है, फॉर असम इट इज मार्च 24 1971। व्हाई? ठीक है, अब 71 में हमने क्यों रखा? बिकॉज 71 के बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान था, नाउ बांग्लादेश, उसका इश्यू रिजॉल्व हो गया था एंड दे गॉट देयर इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, एंड द वन मोर ग्राउंड फॉर द चैलेंज वाज दैट कंसर्न ओवर द कल्चरल राइट्स, कि यहाँ पर जो असमीज पीपल है, उनके कल्चरल राइट को ये थ्रेट है। बिकॉज दे वर सेइंग कि असम में जो इतना सारा इमिग्रेशन हुआ है फ्रॉम बांग्लादेश, उसके कारण बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग पीपल केम टू असम, और असम की जो इंडिजिनियस ट्राइब थी, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी ये धीरे धीरे कम हो रही है। वाई? बिकॉज वो धीरे धीरे माइनॉरिटीज में जा रहे हैं, क्योंकि बंगाली पीपल जो है वो भी दे बिकेम द मेजॉरिटी। सो जैसे कि आर्टिकल 29(1) में लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है, दिस आर्टिकल 29 वी हैव, ठीक है, जिसमें कल्चरल और माइनॉर कल्चरल एंड जो लैंग्विस्टिक राइट है स्क्रिप्ट का, जो अगर इफ यू हैव अ डिस्टिंग्विश्ड स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, or we can say culture, you have right to protect the same, that is given under article 29. So they said कि citizenship standard दूसरा है, article 14 का violation है, this is discrimination against us, और this is also violation of article 29. So this was the grounds for the contention. Now what were the defense? So government ने यहाँ पे क्या defense दिया? So government first said कि this is constitutionally justified. Why? Because under article 11 parliament is empowered to regulate the citizenship matters. ठीक है, we can because constitution have given this right to parliament कि आप citizenship के matter जो है वो आप अपने हिसाब से you can decide और you can regulate the matters of citizenship. One more thing, they said कि अगर section 6A निकल जाता है, so what will be the impact of this particular thing? The impact of this particular thing will be कि बहुत सारे लोग stateless हो जाएंगे, ना वो बांग्लादेश के बचेंगे ना वो इंडिया के बचेंगे। ठीक है, बांग्लादेश से वो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, इंडिया में आके सेटल हुए, और इंडिया भी अगर 6A को इनवैलिडेट कर देता है, सो द पीपल हु केम इन इंडिया टिल 1971, ठीक है, उन सारी एक बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो ना इंडिया की बचेगी ना बांग्लादेश के, तो पहले ही छोड़ चुके थे। ठीक है, एंड दे सेड कि दिस हैव अ हिस्टोरिकल डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट। व्हाई? सो द गवर्नमेंट सेड इन दिस केस कि ये जो डिसीजन लिया था, ये जो सेक्शन इंट्रोड्यूस करा था, उसके पीछे एक हिस्टोरिकल फैक्टर है, उसके पीछे जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, उसके साथ में हमारे बांग्लादेश के साथ में हमारे
relations भी है. So therefore, due to this certain scenarios, we have this section 6A. Now, what was court's ruling? So court held that, so we'll see first majority opinion, then we also see the dissenting opinion by Justice Pardiwala. So first majority opinion was that this is the parliament's authority. So so CGI, who wrote the judgment in the majority, he said that Article 6 and 7 address citizenship, and Constitution by its inception. So Constitution have given this right to the Parliament to decide on the matters of citizenship, and this is allowed to the Parliament to define citizenship and based on certain specific situations or circumstances. So therefore, they said that Section 6A applies to the individual who is not covered by these articles. So आर्टिकल 6 और 7 में सर्टन क्राइटेरिया दिए हैं. उस क्राइटेरिया के अंडर जो लोग 1971 तक आए वो कवर नहीं होते, एंड देयरफॉर दे हैव एडेड वन मोर मेजर, दैट इज सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट. ठीक है, एंड दे सेड कि अब आर्टिकल 14, इफ वी सी आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, कि इक्वल शुड बी ट्रीट इक्वली, लेकिन जो अनइक्वल है वो अनइक्वली ट्रीट करने चाहिए. सो इफ देयर इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि वहां पे कोई ऐसा क्लास लेजिस्लेशन है दैट इज जस्टिफाइड, बिकॉज इफ वी सी कि अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में वुमेन या डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लगते हैं, कुछ प्रोटेक्शन वाले प्रोविजन हमने रखे हुए हैं. ठीक है, वी हैव गिवन सर्टन एक्स्ट्रा प्रोविजंस फॉर देम. ठीक है, जैसे डिफरेंटली एबल्ड या वुमेन को बहुत सारी जगह पर रिलैक्सेशन होता है. व्हाई? बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड क्लास. ठीक है, या उनके साथ में कुछ वी कैन सी कि देयर क्लास लेजिस्लेशन उनको सेपरेटली उनके साथ में डील करना या स्पेशल प्रोविजन होना इज जस्टिफाइड. तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि यहाँ पर कुछ उस तरीके के डेमोग्राफिक चैलेंजेस थे या असम का उस यूनिक सिचुएशन में था, और इसके लिए 6A को इंट्रोड्यूस करा. दैट इज अ क्लास लेजिस्लेशन, दिस इज अ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और देयरफॉर आर्टिकल 14 का ये वॉल्यूशन नहीं है. एंड उसके साथ में आर्टिकल 29 जिसमें कल्चरल राइट्स की बात करी हुई है. तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि अगर हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी आती है, दैट डजंट मीन्स कि इट गोस अगेंस्ट योर कल्चरल राइट्स. नाउ व्हाट वर डिसेंटिंग ओपिनियन? तो जस्टिस पार्दीवाला सेड कि 6A जब इंट्रोड्यूस हुआ था इनिशियली इट वाज वैलिड, लेकिन नाउ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट बिकेम अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, उसके साथ में ही सेड कि आपने बोल तो दिया कि 1971 जो है 71 इज अ कट ऑफ लाइन, बट स्टिल वी कैन सी कि मेजॉरिटी अगर असम में इफ इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ पीपल आर देयर नाउ बंगाली स्पीकिंग, और उसमें से मेजॉरिटी जो है वो बांग्लादेश से ही आए हैं, जिससे ऑलरेडी वहां की डेमोग्राफिक चेंज हो चुकी है और उसको लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन भी नहीं लिया है. सो दैट गोज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द असम्स इंडिजिनियस पीपल एंड इट कॉम्प्लिकेट्स द सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, बिकॉज अभी तक जो बहुत सारी जो इमिग्रेंट्स है, जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है, उनको अभी तक सेग्रीगेट करा ही नहीं है दिस साइड, और ये ही इंडिजिनियस पीपल के राइट्स के अगेंस्ट होता है. ठीक है, सो इट वाज द कोर्ट्स रूलिंग. नाउ विल सी व्हाट वाज असम अकॉर्ड. असम अकॉर्ड जो है वो 3 पार्टीज में हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, एंड थर्ड वाज असम गण परिषद. At that time, that is called Assam Gad Parishad. Now it is a political party in Assam. रूलिंग पार्टी भी रहे हुए. तो असम गण परिषद जो है ये बेसिकली विल सी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था हु सेड कि जो बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं बांग्लादेश से, इससे असम की इंडिजिनियस पीपल आर अफेक्टिंग. ठीक है, सो उसके बाद में दे हैव प्रोटेस्टेड एंड दे सेड कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से ये रुकना चाहिए. और फाइनली वी कैन सी कि ये 3 पार्टीज दैट इज असम गण परिषद, असम मूवमेंट कलेक्टिवली, उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे साइंड दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, और उसी एग्रीमेंट को असम अकॉर्ड बोलते हैं. और इस असम अकॉर्ड से ही 1966 और 1971 का कट ऑफ लाइन जो है वो डिसाइड हुआ है. और उसके बाद में ही सेक्शन 6A जो है दैट वाज इंट्रोड्यूसिंग सिटीजनशिप एक्ट. ओके, नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू. ओके, जस्ट अ सेकंड प्लीज. ओके, सो नाउ विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. ठीक है, सो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, so he unveiled a new lady justice statue at the Supreme Court, replacing the previous version. ठीक है, so in this picture you can see this is the previous
version, and this is the new version of Lady Justice. ठीक है, so इसमें we can see broadly, we can see there were few changes. First, now the eye is uncovered. ठीक है, instead of sword we can see Constitution of India, and we can see a Indian female's attire on the Lady Justice also, that is a sari. Okay, so there are few changes. What is the significance of that? We'll comes to that. First, we'll see the history. So the Lady Justice, when she was introduced in India at the time of obviously British rule. So Calcutta High Court में first time we can see in 1872, and after that Bombay High Court में we can see the installation of Lady Justice at the time of Britishers. Okay, so if we see Bombay High Court में, so first Lady Justice if we see, so अभी presently that is in Supreme Court, और Bombay High Court का जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर हमें लेडी जस्टिस देखने को मिलती है. ठीक है, नाउ इस लेडी जस्टिस कहाँ से आती है? वी कैन ट्रेस हर इन ग्रीक माइथोलॉजी एज वेल एज इन रोमन माइथोलॉजी. ठीक है, काफी सिमिलर है दोनों में ही, इसलिए वी कांट से कि ये ग्रीक माइथोलॉजी से आई है या रोमन माइथोलॉजी से आई है. ग्रीक माइथोलॉजी में वी हैव थीमिस. ठीक है, थीमिस दैट इज द शी इज द गॉडेस ऑफ डिवाइन लॉ. ठीक है, और वही अगर इफ वी सो यहाँ पे जो थीमिस है, थीमिस ऑफन डिपिक्टेड होल्डिंग स्केल टू मेजर द फेयरनेस एंड अ सॉर्ड टू इन्फोर्स इट. If we see Roman mythology में we have Justita. ठीक है, Justita, she is also goddess that represent justice and is similar portrait with a scale and a sword. जो हमारी ओल्ड जस्टिस लेडी थी, ये ग्रीक या रोमन माइथोलॉजी से हम इसका ट्रेस ले सकते हैं. नाउ वी इफ वी सी न्यू जस्टिस लेडी. ठीक है, सो जो न्यू लेडी जस्टिस है उनका स्टैचू क्या सिग्निफाई करता है? फर्स्ट थिंग कि ये जो न्यू लेडी जस्टिस है, इट सिग्निफाइज द डीकोलोनिटी, कि वी आर डीकोलोनाइज्ड, कि नाउ वी केम आउट फ्रॉम द दैट कोलोनाइज्ड mind ideology, or we can say mindset. ठीक है, second, attire. By a sari we see कि we are moving away from the western attire. ठीक है, so we are moving toward the Indianization of our justice system. ठीक है, the earlier it was that lady was blindfolded. Now we can see कि now that blindfold, traditional blindfold is removed, so it symbolizes that justice in India is not a blind, and it recognizes everyone equally. ठीक है, that also enforce our constitutional principles. Now instead of sword, now we have constitution that emphasize that in our country deterrence, not deterrence, now it is a constitution that is supreme. ठीक है, so we are moved from deterrence of sword to the supremacy of the constitution. Scale of justice that was remained, that was retained. ठीक है, that shows impartiality in delivering the judgment. Then we have social relevance also of this change. So this change underscores the importance of considering India's social diversity and upliftment of marginalized community within the legal framework. So ये जो स्टैचू अभी भी है, that signifies कि इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी है, और हम हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमारा लीगल फ्रेमवर्क काम करते रहेगा. ठीक है, एंड विद दैट कल्चरल रिलेवेंस इफ वी सी, सो द स्टैचू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू शेडिंग colonial symbols and creating a justice system in which we have our own cultural and constitutional values. That is also called the Indianization of justice system. Okay, so this is all for today. If you have any suggestion, any feedback, you can share that in the comment box. And even if you have any suggestion for next week, you can let me know in the comment box. Thank you so much for listening me. Stay tuned to लॉ सीखो, और ये जो स्लाइड्स हैं इनका पीडीएफ यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन और द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो.